कंशी टीवी ਨੂੰ देख रही साथ संगत जी, कंशी टीवी वालों मैं मोहन लाल सोंधी बेडफोर्ड विच 10 वालों पहला तो जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव। अज कंशी टीवी की टीम बेडफोर्ड विच उचेचे तौर पर पहुँच के उत्थों का प्रोग्राम जिहड़ा कि अज साडे महान रैबर बाबा साहब अंबेडकर साहब जी के 122वें जन्मदिन ਨੂੰ कवरेज कर रहा है। सत संगत जी, इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਲਈ बेडफोर्ड की डॉक्टर अंबेडकर मिशन सोसाइटी बेडफोर्ड वालों अज बाबा साहिब जी का 122वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। कंशी टीवी अगर बाबा साहिब के मैसेज ਨੂੰ घर घर पहुँचा रहा है तो वो बहुत बड़ा सहयोग है और सहयोग मंगते हैं। इस ही तरह साध संगत जी अपना सहयोग देंगे रहो और बाबा साहिब के मिशन घर घर पहुँचाने में कंशी टीवी की हेल्प करो। सो आओ प्यारी साध संगत जी, अगे का जोड़ा प्रोग्राम है वो आप मानते हैं जी। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1895 में होया सी। 14 अप्रैल तो बाद हुण 1 महीना हो चुका है। लोग बाबा साहब के श्रद्धालु जगह जगह पे हर हफ्ते उन्होंने जन्मदिन मना रहे हैं। ये सिलसिला हाले तक जारी है। बाबा साहब ने जो सारे लोगों वास्ते काम किया, केवल सारे लोगों वास्ते ही नहीं, सारे लोगों वास्ते अज जेकर असीं देखिए जो उन्होंने विचार हैं वो दुनिया भर के जो दबे कुचले लोग हैं उन्होंने बना रहे हैं। हंगरी में रोमा कम्युनिटी जो कि एक आदिवासी कम्युनिटी है, उन्होंने बाबा साहब को बनाया है। सानू खुशी की गल है कि उन्होंने उत्थे 2 स्कूल खोले हैं। मैं बड़ा खुशना करना आया। मैं प्रधान पंजाब के सलाहकार यूके के प्रधान श्री राही जी को बेनती करता हाँ कि वो स्टेज पर आ जाए। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। आदिनादाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। सावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। कामेयमजपमादताना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। खमामि खमामि सापञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पादयेत्।
Now, our MP, Mr. Richard Fuller, has arrived. I welcome him. The caste system, the victims of caste system, they were fighting for to ban discrimination in this country. I remember in 1973, there was one article in Bedford-001 at that time, in which one of the so-called high caste gave an interview and called the untouchables subhumans. And the Bedford people, they voiced against that remark and boycotted his shop, and he has to flee from Bedford. Another thing, in 87, the BBC TV made a documentary about a Chamar pub, Chamar untouchable pub, in Bedford that is hidden. And the people from particular community used to go to that pub, and other people started calling that pub as a Chamar pub. And BBC picked up that point, and they actually showed up in 87. You remember 83, that man over there. He came to Bedford in 78, then in 1983, he gave testimony in the UN's High Commission on Human Rights about the conditions of untouchables, not only in India but in all South Asia, including Europe. Now, from the last 10 years, when this Equality Act, the Equality Bill we were discussing on it, and many people from different communities, they talk about their concerns about the caste. Now, after so many years, the Equality Act came in 2010, and the issue of caste was still pending. I'm pleased, I'm not taking much time on it. I'm pleased our MP, he took leading role in highlighting this issue. He's one of the champions. Being a conservative MP, he spoke against his own government, and his historic speech will be remembered forever. He spoke fearlessly about the victims of caste and discrimination being put to them. I'm not taking much time on it. I called for Mr. Kelly. You must have seen him on BBC television, BBC 2 on the news program. He gave testimony about the caste. Now I called on him to speak few minutes, and then after Mr. Richard Fuller. Having Valmik, honorable guests, respected ladies, gentlemen, and beloved children. Firstly, may I congratulate you on 122nd birth anniversary of our Savior, Dr. Ambedkar. I would like to also congratulate all of you on our milestone victory
in enacting the legislation, Clause 958 of the Equality Act 2010, which is to outlaw the caste discrimination in the United Kingdom. We have achieved this in the face of fierce opposition and a very, very strong lobby from the parties with vested interests against this legislation. This is no surprise. Ambedkar fought against this injustice all of his life and faced unprecedented difficulties. He said, "It is your claim to equality which hurts them. They want to maintain status quo. If you continue to accept your lowly status ungrudgingly, continue to maintain dirty, filthy, backward, ignorant, and poor, and you stay ununited, they will allow you to live in peace. The moment you start to raise your level, the conflict starts. The caste and untouchability is not a transitory or temporary feature. It's eternal and it is lasting. As the caste has been quoted with race, this would make India the world's most racist country. The question is India really a racist country in the world? The answer is simple. Yes, it is. Boss have said, caste has killed public spirit. Caste has destroyed the sense of public charity. Caste has made public opinion impossible. Virtue has become caste-ridden, and morality has become caste-bound, and there is no sympathy to the deserving. When in South Africa, there was a apartheid practiced, and all the white and blacks were segregated, and there were so many sections of the world, those who were protesting against it, to get rid of the apartheid. However, there were some Indians as well as foreigners who felt that white, while denouncing the obnoxious policy of apartheid, it was a moral imperative. India's stand on this issue was very, very undecided. Decided in a way that if they do not support, that means they are already supporting what they are doing at home. If they did not, then they will have nowhere to show their face in the world. India's official stand, therefore, on this issue has been that caste, which involves biological differences, including Now, Britain's Parliament has taken up this question, equating caste discrimination with the racial discrimination, which is banned by law in the United Kingdom. India and the parties concerned against this legislation here in UK are fully aware that this move has very far-reaching repercussions. Other countries such as United States, Canada, Australia, New Zealand, and so many other countries, Europe, have sizable community which includes scheduled caste, untouchables, or Dalits, whatever they call. They might also follow the Britain's example and legislate against caste discrimination. And by doing so, effectively internationalize what India would like to project as being a purely domestic concern, and as such subject only to the Indian legal system
and not to any transitional regulatory authorities such as the United Nations or one of their branch or organizations. With this rising graph of the brutal crimes against the Dalits as well as the women who constitute at least half of the population of the world. But India already runs the risk of international censor for a widespread and chronic gender oppression by the legal binding provision of the United Nations Charter. If the United Nations or other international bodies were to proscribe caste discrimination on a similar grounds, it would prove to be a major black mark against India and its overhyped democracy. For the truth of the matter is that the caste system is a social, economic and educational oppression, apartheid over millennia on Dalits, which have today become part and parcel of the politics of discriminatory divisiveness. That's what is the Indian democracy. In its comparative caste diversity is its disunity, a social compartmentalization and exclusionary and biological racism, and can also be described as a hidden apartheid. Till it was vanished, apartheid was an ugly word in the vocabulary of the world. Now the world's eyes are focused on India's evil system of caste and casteism, which is a hidden apartheid, which is to become a similar alternative expression for injustice. This is what is unnerving for India as well as the opposition parties in the United Kingdom with vested interest against this legislation. I would like to extend my gratitude to our benevolent MP, Mr. Richard Fuller, for his outstanding contribution to this country and the Dalit community in ridding off unacceptable discrimination based on caste. And we are grateful for his help and guidance during this campaign. Once more, I congratulate you on this auspicious occasion of our 122nd birth anniversary. And by saying that, I take leave. Jai Bhim, Jai Valbir, Jai Valmik. We saw him many times on this issue. He always guided us, helped us, and told us how to proceed further to lobby all the MPs. He took very keen personal interest to write to various MPs, to the ministers on this issue. I request Mr. Fuller to say a few words. Well, thank you very much for the invitation to the meeting today of the Ambedkar Society. I apologize a little bit late. I don't have a car, but there's no shame in walking, so I decided I would walk. And then it started to rain. Well, there's no shame in walking in the rain, but you better have a good pair of shoes. So I apologize for appearing a little bit late and a little bit wet in front of you, but there were and are a few things that I would like to say. First thing I'd like to say is how enormously proud I am of my hometown of Bedford. I love this town irrationally, and that is because of the people that comprise it and its history. And over the last few weeks, those two qualities have been at their peak. A few weeks ago, some of my constituents came to talk to me
about the issue of caste discrimination. Since I became Member of Parliament in 2010, this has been an issue that has concerned me in any case. And I placed a number of questions to the Home Secretary and sought a number of meetings on this issue. But there was a sense from those discussions that this was a time when action could be taken. And for me, it was not a complicated issue. I don't need to appeal to Mr. Cameron. I don't need to worry about my future political career. I've had a career, I don't need to do any of those things. What I need to do is to stand up against prejudice and to use the privilege that I have as a Member of Parliament in the Mother of Parliaments, to use my experience and my judgment to speak up for those issues where change is needed. And I was emboldened to do that by the personal experiences and personal testimony of our decisions. And for me, the issue of prejudice is not a consequence of a quantum of suffering. It is its mere presence. So when people said that caste discrimination in the workplace does not occur very often, that was not important to me. It was the fact that it occurred at all. When they said that caste discrimination is dying out in the UK and we don't need to worry about it because a generation or two will be gone, that didn't matter to me. Because what matters to me is the discrimination that is felt in someone's heart and soul today. And we cannot wait for remedy for the next generation and generations to come. And because of this wonderful democracy that we have, and the ability for constituents to pop into my office at 135 Midland Road, just over the bridge, to talk about this, that voice for justice rang forward strongly from Bedford and into the House of Commons. Now, that process relied upon an enormous amount of commitment from members of the House of Lords and of all political parties. This was not a victory of the Liberal Democrat here in pursuing this issue for many, many years. Change in the United Kingdom is now going to happen. I pray that the legislation and the protections that it affords are not required of them. I hope that what people say, which is there are a few cases and it's dying out, proves to be the case. But I want the law to be there to protect people just in case it does not. But beyond this message here in the United Kingdom, there is a deeper message for one of the emerging powers of the world, which is India. Now, the history of the United Kingdom and India, our histories are linked inextricably for the past and into the future. And as such, each of us have cause to contemplate on the things that we do right and the things that we do wrong. And we should do so as equals and as friends. When we criticize our friends, it's not because we don't love them and we don't care for them. It's just we want to see that they do the right thing. In India, the issue of discrimination based on caste will be an issue that will be front and foremost in the minds of the leaders of the world's nations as India's power grows over the coming decades. And we will test that system against the highest expectations of human rights. And we will look to the Constitution of India. And we will say, look here what it says in your words. Is that what is true in practice? We know this test is coming, and India knows this test is coming, because other countries have had it too. The United States, in its declaration, said, we believe that all these truths, I can't remember what it said actually, we hold all these truths as self-evident, that all men are created equal. And yet in the Constitution, when they worked out the allocation of seats into Congress, they valued the dark-skinned man at 2/3 that of the white-skinned man. The
The reality did not hold up to the words that had been written down. That test will be a test on the issue of caste. I personally believe that India in the decades ahead. That is why the work of the Dr. Ambedkar Mission Society, who wish to hold true to the word of the Constitution of India and see it implemented in practice, is so important. Intimately that of India, that it is perfectly reasonable for us here in the United Kingdom to express our opinion on that issue. We've made a step here forward by outlawing caste discrimination in the workplace. Let us now see how we can build on that, to build a future without prejudice for all. Thank you very much indeed for giving me the chance to speak with you. Mr. Fuller has quoted us right from the beginning to today, and I hope he will continue to quote us in the future as well. To acknowledge these services, we wish to give a small token of love from these people, and we have prepared a small presentation, and we wish to give पढ़ाई लड़ी हकाली लड़ाई कर करके पढ़ाई लड़ी हक्कां दी लड़ाई साडी कौम दा साडी कौम दा कदे नी बेड़ा पार होना सी बाबा अब ना जाओंदे पीर राओ ना जाओंदे कित्तों दलता दहना सतिकार होना सी बाबा अब ना जाओंदे कंची वाले ना जाओंदे ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 122ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਡਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਆਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਛੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਡਫੋਰਡ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰ ਕੱਢਵੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਯੂਐਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜੀਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਚਾਹਲ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਡਫੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਣਨਯੋਗ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਜੀਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਕਹਿ ਜੀ ਅਰੁਣ ਜੀ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਕੰਮ ਇਸ caste discrimination ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, they have written to every MP, more than 650 MPs, they have written letters to every single one. So ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਸਟ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨੇ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜੀਭ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ them a big applause to this. ਇਨਪੁਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਪੈਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਧਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਐਂਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
नहीं करते और समा बहुत आएगा, समा बहुत जल्दी आएगा जो इसको रियलाइज करेंगे। असि सारे ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। We are very happy to see the gathering like this after a long time in Bedford. लेकिन उस महापुरुष की बदौलत, लेकिन जो राजे महाराजे हैं जो कुछ सदियां तो लेके चले गए, उन्होंने चीज़ें उन्होंने किस तरह प्रिजर्व करके रखा हुआ है। लेकिन बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर जी के, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो उन्होंने बिलोंगिंग्स हैं, जो उन्होंने कोट हैं, जो उन्होंने टाइयां हैं, जो उन्होंने कुर्ते हैं, या वो कौन जेड़ा कि वो आके सुप्रीम कोर्ट विच जाया करते सन, उसका इतना बुरा हाल है कि तुहानू देख के तुसीं जरा देखो यूट्यूब ते जाके तुहाडा शर्म के नाल सिर झुकेगा। करोड़ों रुपए ये भारत सरकार जिन्हें भी लीडर हैं सारे बाबा साहब के उसी सिद्धांत के अगे जाके एक कसम खाते हैं कि असं ये काम करांगे, लेकिन वो शर्म की गल है कि वो सिर्फ बाबा साहब के बुत अगे ही झुकते हैं, लेकिन उन्होंने चीज़ों के बारे कोई भी नहीं की जा रही। उन्होंने बारे अगर इदा ही काम चलता रहा तो आने वाले समय में सानू बाबा साहब सिर्फ पत्थर से मिलेंगे या किसी मैटर से मिलेंगे, लेकिन जो असली चीज है वो अलोप होती जा रही है। मेरे वीरों, आज अगर तुसी भी हमला मारो, तुसी भी उस इंडियन गवर्नमेंट को लिखो कि इससे जल्दी तो जल्दी तवज्जो दी जाए, जल्दी तो जल्दी इस पर ध्यान दिया जाए, नहीं तो इसका जो होना वाला चंगा नहीं होगा। अगर असली चीजे बच्चे सारा काम उन्होंने काफी में जाके इतने तक कर सकते हैं, असं उन्होंने चीजों को भी संभाल सकते हैं, या कि इंडिया भारत न होता है। Mr. Chairman and company. Brothers and sisters, it is very happy occasion indeed. In this particular hall, we see the jubilation and the celebration of great Baba Samaj. Jubilation in a sense that in this hall what we see the portrait and the exhibitions of Baba Sahib at the back, as well as the face of Mr. Ravidass, the Supreme Court of India, who was the first member from our community, happened to be the lowest of low Valmik community, but he was the Supreme Court advocate there, and he presented our case of atrocity to untouchables of India. And at the first time ever in the world, people noticed the human suffering, the people sufferers and oppressed forever in agony. And first people who got to be indebted as the people of Bedford and Ambedkar Mission Society, they are the one who sent Mr. Ravidass. You see him there. He is no more with us, but we cherish his memory. Equally, we cherish the memory of our beloved brother Charan Chahar, who first
free of caste. And due to his effort, the book we have launched in the House of Commons. And today we are very happy to say that our MP, and I would say our beloved MP, Richard Fuller, and his every word, we will cherish and ever remember his word. Where he spoke our heart and our memory. And Richard, we say to this with our bottom of our heart, that our people still suffering in India, but they will ever remember you and cherish your memory. With this word, I can say so many things, Richard. But what is happening now? Those people who are opposing, those are the people of the National Hindu Council, National Temples of the Hindu organization, this and that, all these national organizations come. We all remember still about the National Front. Where is all this Hindu and all this national organization has come from? Do they ever realize what suffering we are going through? Do they ever realize what we are going through? How our children and our coming generation are going to be a victim of this suffering? In the education, in job, in every aspect, we've been neglected, oppressed and suppressed in this country. And this country who are very much advocating for the equal right and equal humanity and equal people. Ambedkar is the only man who ever came in this world to voice the people who were suppressed and oppressed. And we really admire and we are proud that due to him today, we are on that level of understanding that today we can live with the self-respect and dignity, and we owe to our Master and Savior Baba Saheb Ambedkar. दोस्तों, आज जो कुछ हो रहा है और आज जो कुछ लोगों ने पाया है, due to the pioneers and the people who have really worked hard, and particularly the people who have really done the great job at the news night, and particularly Brother Uki Kelly, and there are some other people who have really worked hard. And I really admire your young blood and young children like Rajchan, like the Santosh, like there are so many youngsters, and particularly this happened because of the electronic media, because of this brother Nirmal, and because of these people who have the Kanshi radio, Kanshi TV, and those are the people who really have worked very hard, and they have flooded with the coaches, and they have done very hard work, and we all admire all our brothers when the crisis and the problem have come for our generation. If we don't really work like so in the 1968 when the Registration Act have come, and those days the people have realized only because dogs and Indians not allowed in the toilet. That time the law came of the Registration Act. If we have missed the boat now about making the actual legalization and the work for our community, today we would not have achieved today what we have got today. So it is the right thing happened at the right time. I can go on saying and quoting too many things, but F.A.B.O, Arun Kumar ji is the Joint Secretary of the Federation of Ambedkarites and Buddhist religion. He has rightly praised Richard, and he has rightly done the right thing to honor Richard, and we should have this celebration time and again, and this way we would really do our marvelous work of our statesman Dr. Baba Saheb Ambedkar, and we would still carry on. साथियों, ये जो छूट-छाट का जो मामला है वो लोगों के अंदर ऐसा है कि ये बात अभी खत्म हो चुकी है, और लोग ऐसे कहते हैं कि छूट-छाट और जात भेद और ये चीज अभी नहीं है, लेकिन ये नहीं है, ऐसा मानना गलत है। अभी भी ये मौजूद है, इंग्लैंड में भी है, और wherever they जहां भी गए हैं, हमारे लोग जो है, भारतीय लोग जो है, जहां भी गए हैं वो साथ में लेके गए हैं। इस लाइक इमोशनल बैगेजेस जो बैगेज जैसे लेके आते हैं अपने साथ में लेके, इस तरह से एक बैगेज जो है दिमाग में वो लेके अभी भी है और वो चल रहा है, और उसके लिए हम लोगों ने बहुत से काम आने वाले समय में हम लोगों ने मिलजुल के बहुत सा काम करना है। मैं मुझे ज्यादा नहीं कहते हुए मुझे एक दो बातें और कहनी है कि ये जो कुछ हुआ है वो अचानक नहीं हुआ है। हम लोगों ने बैकग्राउंड में बहुत से काम किए हैं।
आप लोगों को पता होगा एक फिल्म आई थी इन द फुटस्टेप ऑफ अम्बेडकर, इतनी पॉपुलर हुई थी, इतनी पॉपुलर हुई। उसके बाद में कास्ट एट बर्थ वो टेलीविजन में हुआ, इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में सारे जगह पर गया। और उसके बाद में अनटचेबल्स ऑफ इंडिया केली ग्रिफिथ के जब फिल्म आई और पूरे इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में सारे के सारे में जब गई तो लोगों को पता चला कि ये कास्ट सिस्टम क्या है, डॉक्टर अंबेडकर क्या है, पूरे वर्ल्ड में पता चला। हम लोगों ने इतना काम किया है, इतना काम किया है कि एनकाउंटर द वर्ल्ड इंडिया एंड द लेगेसी बिहाइंड इट, इतना काम हुआ, इतनी पब्लिसिटी हुई। ऐसे कितने मेरे पास कोट है तो कहने के हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन साथियों हम कहते हैं कि एक काफला जो है, एक काफला है वो कभी रुकने वाला नहीं है, वो चलता ही रहेगा। हमने जो हमारी नई पीढ़ी है उसको तैयार कर दी है, वो नई पीढ़ी पीछे हटने वाली नहीं है। और इस तरह से जो हमने तैयार कर दी है, जैसे जहां साहब ने जो तैयार कर दी थी, जैसे भगवान दास जी ने कर दी थी, वो लोग आज नहीं रही है, लेकिन ये मिशन और ये काफला चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। उसके मैं दावा के साथ कहता हूँ, वो दावा के साथ कहता हूँ। आखिरी अनाउंसमेंट, जैसे मैं आगे रिचर्ड फुलर को बता रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर 22 साल की उम्र में गए थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी। अगर बाबा साहब अम्बेडकर 100 साल पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी विच इज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, वहां से डॉक्टरेट हासिल की बाबा साहब ने। अगर बाबा साहब अमेरिका नहीं गए होते, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में नहीं गए होते, तो बाबा साहब अम्बेडकर जो हमने आज मिला है वो नहीं पाते। हम लोग 20 जुलाई 2013 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बड़े शानदार ढंग से कोलंबिया यूनिवर्सिटी वाले ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और हमने साथ में स्टूडेंट ऑर्गेनाइज करना हमने भी है, तो हम लोग वहां जा रहे हैं। आप लोगों को भी हम निमंत्रण देते हैं, इनवाइट करते हैं, आप आइए और जोरदार शान ढंग से मनाइए कि बाबा साहब अम्बेडकर इज द ग्रेट अम्बेडकर। और हम लोग वहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। टेक अ प्राइड इन दैट एंड जुबिलेशन ऑफ दिस सेकंड थिंग वी शुड डू। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय गुरु। बहुत समा चाहिए है, क्योंकि अगर आप अपनी हिस्ट्री को देखिए तो यदि 4-5 हज़ार साल पहले जाओ मंजो धारा हड़प्पा इधर जो हिस्ट्री बोलो तो तुम्हें पता लगता है सारी हिस्ट्री की। उस तो बाद जो बहुत आम जुड़ा दे आया, जुड़ा दे आके चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जी, ये सारे राजे जिले से ये सारे 7 में विचों से, क्योंकि हर्षवर्धन तक 1100 साल आपा राज किया इंडिया में। लेकिन कुछ जिले कांग्रेस वाले हिंदू या कोई भी इंसान मतलब हिंदुओं की कहीं चंगे भी लोग है, कहीं मारे आ कांग्रेस जिले है उन्होंने बहुत आदमी डाउनफॉल की जान ले बहुत लोग आपका जिले पेशियों के मतलब शहर बनने शुरू कर दी, यानी पेशियों के शहर से मोल पैदा जिले शहर जाओ कहने इस करके जो बहुत आना वो इंडिया को लाखों कंट्रियां चले गया, इंडिया में खत्म हो गया तकरीबन। लाखों कंट्रियां जितने से गया वो कंट्री जिले आपको सारे धनवान हो गए तो इंडिया कंगाल हो गया। सो बहुत सारा स्टेप निरपेक्ष जात पात उसमें कोई जात पात नहीं ना हो कहना तो जरा बहुत ही बुद्धिस्ट हो गया और बुद्धिस्ट है नथिंग है। बाबा साहब का कहना मानना चाहिए और बाबा साहब कहते गुरु नानक कहते मैं ग्रंथ साहब 20 साल पढ़िया ग्रंथ साहब ने जो कुछ लिखा अगर तुम उन्होंने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करो तो वो सारा बहुत धर्म वो तुम है ना जो 5 टक्के छड़ के दे लो बाकी सारा बहुत धर्म क्योंकि जो गुरु गोबिंद सिंह ने पढ़ने पैदा होया पढ़ना जो बहुत धर्म केंद्र से इस करके जो केंद्र है वो जो बच्चा भगवान होगा वो तो असर तो होता ही है। इस करके गुरु गोबिंद के जीवन के उत्ते बहुत बड़ा असर। सो इस करके मैं ज़्यादा ना कहना है तो समा 2 मिनट में रहेगा मैं ज़्यादा कह गया सो जीवन का है सो सारा बहुत बहुत बधाई हो गई बाबा के जन्मदिन थी। सो जय भीम, जय भारत। मेरे पास हमने
मेरे ख्याल है अपनी आ गया एक को कवि है वो हमारे सारी स्टेज पर पहली बार कविता पढ़ रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर सामने तमाम जिन्हें नामुमकिन सी करना सारे मुमकिन तो मेरी कविता निचोड़ भी दी है। माना के दूर गम का अंधेरा नहीं होता, माना के दूर गम का अंधेरा नहीं होता, ये किसने कहा है कि सवेरा नहीं होता, ये किसने कहा है कि सवेरा नहीं होता। बहाते हैं वतन के लिए खून जो बशर, बहाते हैं वतन के लिए खून जो बशर, उनकी जिंदगी में उजाला है अंधेरा नहीं, उनकी जिंदगी में उजाला है अंधेरा नहीं होता। वतन प्रस्ती का खून है जिनकी रगों में, वतन प्रस्ती का खून है जिनकी रगों में, उनकी जुबान पे तेरा मेरा नहीं होता, उनकी जुबान पे तेरा मेरा नहीं होता। उठो खाकसार करो वतन के लिए कुछ ना कुछ जीते जी, उठो खाकसार वतन के लिए करो कुछ ना कुछ जीते जी। मिट जाते हैं हकूक बात मरने की सवेरा नहीं होता, मिट जाते हैं हकूक बात मरने की सवेरा नहीं होता। सोचना कुछ नहीं, अगर कोई गलत लफ्ज़ निकल जाए तो एक क्योंकि जीते जी सब कुछ करना पड़ा है, मतलब तो बात तस्वीर होता ही है। MP Saab and distinguished guests, brothers and sisters, Jai Bhim, Jai Bhim. काशी रेडियो स्काई रेडियो चैनल 0205 पे है, आपकी सेवा में है। पहले मैं एक कुछ कहना चाहूँगा, फिर मैं मान के लास्ट बोलूँगा कि स्काई काशी रेडियो स्काई रेडियो चैनल पे सारे 25, 26, 27% सारी कम्युनिटी विचों वाल्मीकि कम्युनिटी, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, रविदासिया कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी तो मक्खा में जो सही आवाज आती, त्यागी आवाज आती 53 countries around the world। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੰਡਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੇ ਕਾਸਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ It is up to you to use the media now it's here। ठीक है, मैं आरोप का बहुत धन्यवाद करता हूँ, सानू 2 रोज का मौका दिता ते इस सेवा में सानू मौका दिता। सारी टीम कई फंक्शन विच भी जाकर ब्रॉडकास्ट की, हर फंक्शन मीडिया विच ब्रॉडकास्ट किया सी, पर हाउस पार्लियामेंट में ब्रॉडकास्ट किया सी, हाउस में लोग को जाकर ब्रॉडकास्ट किया सी। जितने भी सानू सारे देश सारे ओपन से हाल हो रहे हैं, सारे हर के साथ ब्रॉडकास्ट कर रहे काशी तो ब्रॉडकास्ट होता, श्री दास मंदिर का ब्रॉडकास्ट होता, श्री वाल्मीकि मंदिर का ब्रॉडकास्ट होता, एक बेडफोर्ड गुरुद्वारे का कई बार एक सदर ब्रॉडकास्ट किया, पिछले राष्ट्रीय में ऐसी फंक्शन विच असि आके ब्रॉडकास्ट किया सी। असर पूरी बेनती करते हैं कि थारे से जोड़ना रेडियो चलूगा, ये नहीं चलूगा, प्लीज सारी पूरी सपोर्ट करो। तो ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ, जिन्हें भी गेस्ट आने वाले हैं, ਅਸੀਂ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं काशी टीवी का, काशी रेडियो का, समाज टीवी पेपर जिन्होंने साਡਾ साथ दिता है। गुरु रविदास बहुत समा हो गया, एजुकेशन की लाइन सब कुछ हो गया, ये हम पार्टी वाली है और आई डोंट नो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर। तो टाइम हैज कम नाउ कि आप हमला मारिए बहुत जल्दी, क्योंकि जिन्ना से एजुकेशन नहीं सी, असली देर सी, अंधेरा